Good morning, everyone. And in today's class, again, we'll start with the new points which I have already covered. That is, function part is completed. But next is how to make modules and all that I will start. But before I'll start the class, I will just share a screen with you. The screen is shared now. Share a screen. And then I will show you the syllabus, that is term-wise syllabus is given here and the 12th class syllabus. So first thing is computer science class 11 prerequisites. तो 11th का ध्यान रखना है कि जो 11th में है. Learning outcomes, students should be able to apply the concept of function. ठीक है? Explain and use of the file, concept of file handling. Use the basic data structure stacks. Qs हटा दिया इन्होंने. Good. Explain basics of computer networks. Use database concepts along with ये सारा syllabus अब आपके है. तो 1 to 11th का पूरा है programming part and so on. So here we'll come to the portion and the distribution of marks. Please note it down, or you just open this file from cbseacademic.nic.in, and from there you will get this syllabus. So distribution of marks is such a way: unit 1 computational thinking and programming 2 40 marks, periods के accordingly वो तो is not like we try to follow, but plus हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं. Computer networks 10 marks, database management 20 marks, to total 70 marks. Same way, when you are having the practical, this is for the term 1. Term 1, as I clicked. Okay, 13. Unit, अब here it is given, ये total, this is the total syllabus they have given, not term wise. Here it comes here, unit wise syllabus, term 1. So देखो, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, thanks God, everything is same. So पूरा ये complete prerequisite of topics covered in 11. So this we have covered. Functions, types of function, built-in function, scope, local, global. ठीक है. Then default parameters, function return, flow of execution, scope of variable. Introduction to file next comes here. But as I have promised you, syllabus is reduced, beta. So but जो मैं आज पढ़ाऊंगा अभी इसको नोट कर लेना, but still it's not mentioned here. We have done the positional argument, default argument, arguments and parameters, function returning values, flow of execution. So this I have already enough I have done. Got it? Show thumbs up. That I'll go ahead. Next point, syllabus is reduced again. I'm telling you. Introduction to files, type of files, etc. Then text file, binary files, CSV files. So this is the term 1. So this I have to teach you the files. In fact, I have to teach you here only. In term 2, computational thinking and programming 2 is there. That contains the data structure, stack, operation, stack, push and pop, implementation of stack using list. So that's the way we will do, no problem. Next comes here, computer network, full definitions are there. And then database management is there. So this I have to teach you in term 2. So not much syllabus is there, believe me. And after that, the practical is there. Lab test, Python program, 3 SQL queries based on this. Okay. And so on. Suggested practical list, वो सब मैं आपको करा दूँगा. Project है. So project I will give it to you. And based on the topics which I'll teach you, project उसी को बनाना है. ये pattern वेटर्न तो सब कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं. Okay. So we'll start our class, and today I will teach you how to make your own modules. Very simple. Own modules कैसे बनाएंगे? So I will write it here, your own modules in such a way. Just a minute. For that I will start Python. Recording already started, no problem. Python IDLE 3.0.
And in this, what we will do, wait for a minute, we'll start new. Now it is very easy to make a module. So first you write definitions for it. थोड़ी definition लिखा दें तो आपको easy हो जाएगा. Using chapter name is using Python libraries. बेटा ये syllabus से कट हो चुका है, इतना ध्यान रखना. Chapter name is using Python libraries. That is chapter number 4, deducted from the CBSE syllabus. But are you interested in learning? You say, then only I'll go ahead. Otherwise, I'll cut this. मैं क्यों पढ़ाऊं? Nishal is interested. Noel is not interested. So, Badguru, stop it. Noel, you are not interested in learning more? Noel, I'm asking you. You are interested. So all are interested. तो मैं पढ़ा देता हूँ. Now you write one definition here. Library first you write. Chapter number 4, using Python libraries. A library refers to a collection of modules. A library refers to a collection of modules that together cater to a specific type of needs or application. आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं कि what a library refers to a collection of modules which can help a user to do different types of tasks. ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है? Which can be used to do the different type of task. अब इसमें आपको एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए, import. The import statement can be used to import modules and even for importing selected items. Import statement can be used to import entire module and even for importing selected items. The import statement internally execute the code of module file and then make it available to your program. After importing any module, after importing a module, ऐसे कर लो, after importing a module, you can use any function of that module. For example, import math. What we write here, example है, print math dot sqrt 12. And when you run this program, so remember that you are writing A and save it and run it. You are getting the result 3 point something. Now, why you are getting this? The simple reason is we have imported a math module and that math module is having all the mathematical function. So when you are using the math function such as sqrt, what you have to write in beginning? math.sqrt. ठीक है? चाहो तो एक लाइन लिख लो. After importing a module, we can use any function as per following format, that is module name dot function. This way of referring to a module is known as
dot not that's referring to a module object is called or known as dot notation. Dot notation. Okay. So we'll come to the point here, how to make module. So now you write. अब इस पे ज्यादा मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आप इसको समझो. Creating and using modules. Python has different types of modules. Number one, इतना डिटेल पढ़ाने का मुझे नहीं लगता है कोई मतलब है, इतना कोई मतलब नहीं होता है. So leave it, discard this point. मुझे नहीं लगता है कि will go for such a detail in syllabus is not mentioned. So I will go for the simple. देखिए, a module in Python, you not write this. A module की definition. A module in Python is simply a module in Python is simply a Python file that has number of functions, that has number of functions and has extension, and the file extension is .py, and the file extension is py. You write now structure of Python module. Structure of a Python module. लिख लो, इतना सारी चीजें मैं समझा देता हूँ. नंबर वन, doc string, that is documentation. Doc string, that is documentation, that can be given in single, that can be given in triple quotes. That can be given in triple quotes और hash documentation जैसे करते हैं same. Second is variables and constant that can be defined within a function, or even values can be passed to a function. Next, classes पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी. Objects डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, डिटेल नहीं जाएंगे. Statements are the instructions. Statement होगा इसके अंदर. Next point, functions. It's a name grouped of instructions or statements. Functions is the name group of statements or instructions. Now points कितने हो गए structure में? Doc string, variables and constant, classes, objects, statements, functions. Clear हुआ? Please show thumbs up कि ये इतने points हो सकते हैं. So अभी मैं simple है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है. So मैं आपको एक मॉड्यूल बनाऊंगा और मैं आपको अभी इंपोर्ट वाला हो सकता है. टुडे आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू,
because time is running. So after that I will just see कि कैसे उसको complete करूँ. 9:01 हो चुका है. So till 9:05 I will keep my class. Okay. Or because we have to attend another classes also. So I will just now make a module for you. So any module I can make. Suppose I write it here. Def. बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है. Sum function with two parameters a and b, and that is returning the sum. One more function I am making here, product ab, and then return a into b. Then function def, you can say factorial. And then I'll pass n. For n we are finding. Here you have to write the factorial program. F is equals to 1 for I in range 1, n plus 1, and then f is equals to f into I, and all the function we are returning. Sorry, this one here, and then we will return f. Main sum 3, 4. Print product 4, 5. Print factorial 4. And then I will run this program. Now, this part is known as functions. ये आपके documentation कर रहे हैं. ये हैं, we are having 3 functions. Sum to add numbers नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना. prod to get the product, and facto to get the factorial of a number. And then please hash भी लगा सकते हैं. That is the documentation part is over. These are the variables here and the statements are there. We have defined. And then we are calling this to run. Run. एक बार run करना जरूरी है because whatever the error that will be removed. Let's see the error has come. Name facto is not defined. Name fact. This is written facto. Facto. And I will run this again. Once all the results are coming correctly, that means 100% we will be able to make. So 7, 20, and 24. The result is correct for all these functions. Yes or no? Please show thumbs up. तो बात पहली खत्म हो जाए. So समझना बेटा, otherwise दिक्कत आएगी. उत्कर्ष. Okay. So we are having 3 functions, and this function we are going to make it as module. So सबसे पहले आपको एक फाइल क्रिएट करनी है Python, in which you have to write 3 functions, sum, product, and fact, and then you have to call this function also, run it also. Once all this work is completed, please note down somewhere. You just delete the main part. ये आपका क्या था? मेन पार्ट था. ये मेन था. मैं इसको डिफाइन करने के लिए ऐसे ही लिख देता हूं, कोई इसका मतलब नहीं होता है. And this has to be deleted. This has to be deleted from the main part. रखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में रख लीजिए, मगर जरूरत नहीं है. फिर से बता रहा हूं, आपका फंक्शन जब बनेगा तो दिस मच पार्ट इज रिक्वायर्ड. डॉक्यूमेंटेशन लेना चाहते हैं, यू कैन टेक डॉक्यूमेंटेशन. दिस मेन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. मेन क्यों यूज किया है? इन ऑर्डर टू रन द प्रोग्राम. सारे एरर वगैरह ठीक कर लेंगे. क्या समझ में आई बात? और अगर रखना ही चाहते हो, एक्चुअली नीड नहीं है, बट अगर रखना ही चाहते हो तो कमेंट्स में दे देना. उत्कर्ष, आपने लेट ज्वाइन किया क्या उत्कर्ष?
You can reply me, Utkarsh, no problem. Give your reply. Unmute yourself. I have allowed you. Is it there or not? नहीं है. Security. You can unmute yourself. I have given almost all the facilities. Chat हटा देते हैं चलो. So. Yes, sir. Have you understood what I am teaching you? Yes, sir. Somewhat I have understood. Why you have joined late today? सर कोचिंग की क्लास चल रही थी सर सुबह वाली, तो जस्ट उसके बाद यहीं ज्वाइन कर लिया। तो लोगों को टाइम पे खत्म करना चाहिए ना। एनीवेज चलिए, सो व्हाट आई हैव टॉट यू सिंपल है बेटा। वी आर टीचिंग, आई एम टीचिंग यू मॉड्यूल। कैसे मॉड्यूल बनाते हैं, इससे पहले मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया है, पहले ही बता दूं। आई हैव डिस्कसिंग सिलेबस एंड द अदर पॉइंट्स। सो सिलेबस वगैरह आप देख लेना। तो जब भी मॉड्यूल बनाना हो तो यू हैव टू मेक डिफरेंट फंक्शंस। So in this we have made 3 functions and this ये 3 functions सही हैं या नहीं है, उसके लिए मेन की जरूरत है। आपको मेन बनाने के बाद, रन करने के बाद या तो कमेंट में दे दो या डिलीट कर दो, इसकी जरूरत है ही नहीं। फिर से क्लियर कर दो। नाउ यू सेव इट, फाइल सेव एज, एंड आई विल गिव द नेम रजा फन। रजा नाम का फंक्शन है या फंक, ठीक है, फंक्शन सेव। आप जादौन नाम दे सकते हैं, उत्कर्ष दे सकते हैं, केविन दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अपने नाम का फंक्शन बनेगा। मैं रजा सर के नाम से बना लेता हूँ, रजा सर। ये मेरा एक मॉड्यूल बनने जा रहा है। इसका एक्सटेंशन पाइथन फाइल है, सो इसका एक्सटेंशन .py ही होगा। सेव। अब ये मॉड्यूल बन गया है, मगर अभी भी आप इंपोर्ट करके इसे यूज नहीं कर सकते हो। सेव्ड है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एग्जिट कर जाता हूँ, बंद कर देता हूँ, फिर से मैं पाइथन स्टार्ट करता हूँ। नहीं, अभी तो ये मेन फाइल में ना यूज हो जाएगा। वेट वेट, हो जाना चाहिए, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। पाइथन आइडियली ओके, फाइल न्यू। अब नाउ आई विल नॉट राइट द प्रोग्राम कंप्लीट, आई विल जस्ट राइट इंपोर्ट रजा सर। रजा सर को इंपोर्ट कर लो, एंटर, एंड देन यू राइट प्रिंट सम 4,5 and run it. इस फाइल का नाम कुछ भी दे दो, ABC, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ एरर आई ना, ओके, इसलिए आई कि मैंने मॉड्यूल नाम नहीं लिखा। जैसे मैथ डॉट, तो रजा सर डॉट, एंड देन आई विल रन दिस प्रोग्राम। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया और यहां लिखा, ध्यान देखना, रजा सर डॉट, क्या देखा आपने? The functions are available with this module, and then I will select one of the module, some, okay, and then I will do the processing part. देखो वहां पे AB लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। 4,5 की 2 वैल्यूज देनी है, and sorry, and then you click it here, enter। और नहीं करना है तो run it। When you run this program, you got the name. Where is the program? प्रोग्राम है कहाँ? प्रोग्राम तो है ही नहीं, तो फिर रजा सर डॉट सम क्यों चल रहा है? एनी ऑफ यू? बिकॉज वी हैव अ मॉड्यूल, और प्रोग्राम इज नाउ हिडन इन मॉड्यूल। only we have to call the module and the function, associate the function using the dot operator। समझ में आ गई बात? So I will discuss more on this, please note down and please write down all the steps which I have told you। Okay, take care of yourself, we'll meet in the next class, till then goodbye, have a nice day, bye। Just wait, attendance ले लेता हूँ, just wait।
कौन निकल गया? वन, निश्चल, नोएल, जॉन, उत्कर्ष एंड केविन। बाय।